अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज को 29 नवंबर 2025 है और तकरीबन 3 दिन हो गए कि जो टाइपो में जो फायर आग लगी थी उनको रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में। Let's turn to that other important story that we've seen developing over the last few hours, because the number of those killed in a fire at a high-rise residential complex in Hong Kong has now risen to at least 13. Flames have taken hold across all 8 blocks of the development in the northern Tai Po district. Some residents are believed to be still trapped inside their homes. Among those killed is a firefighter. Well, let's speak to our reporter in Hong Kong, Martin Yip. And Martin, bring me right up to date in terms of the very latest. Yeah, so in terms of the fire itself, you might be able to see from my back that it's still burning. There are at least 2 hoses being raised by the firefighters trying to spray water into the building itself, but it's obviously not enough to battle all these places, because we are talking about 8 buildings, 32 stories each. That is in trouble. This fire was started from scaffolding, bamboo scaffoldings outside of buildings, because this housing estate is already 40 years old. It's just going through some renovation right at this moment. और 7 ब्लॉक्स में आग लगी थी और बहुत ही ज़्यादा आग लगी थी उन बिल्डिंगों में। कह रहे कि ये हांगकांग की काफ़ी डेकेड्स में सबसे डेडलीस्ट आग है और इस सदी की सबसे यानी 21st सेंचुरी की सबसे डेडलीस्ट आग है इस हांगकांग में। और 2008 में एक आग लगी थी, वो इतनी डेडली नहीं थी। और फिर इससे 2008 से पहले 1996 में एक यामाते में एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग थी, वहाँ पर आग लगी थी, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग नहीं थी सरी। और इससे पहले और भी 1948 में भी एक कहते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लगी थी, लेकिन इससे भी पहले 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के बिल्कुल एंड में
जो रेस कोर्स है ना वहाँ पर आग लगी थी बहुत ही बड़ी, जो कि वो है ही, वहाँ दरख्त भी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ आग लगी थी और वहाँ बहुत इतनी बड़ी आग थी कि 618 लोग तब मरे थे। 1918 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो अभी जो टाइपो में जो आग लगी ये इन डेकेड्स में सबसे बड़ी आग है और इसमें तकरीबन 128 लोग मरे हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग अभी तक भी मिसिंग हैं और 3 लोगों को जो बड़े कंस्ट्रक्शन फर्म के जो सरबराह थे उन्हें अरेस्ट किया है पुलिस वालों ने और बहुत ही सारे फायरमैन और एम्बुलेंस और पुलिस वाले इकट्ठे हो गए थे उन बिल्डिंग के नीचे उस फायर को मिटाने के लिए। जैसे कि आप ये वीडियो फुटेज भी देख सकते हैं, पूरा टाइम लैप्स है। ये फुटेजेस इतने फेमस हो गए कि ये इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह में भी ये फैल गए ये फुटेजेस।中午2點9到咯，突然之間聽噼哩啪啦好嘈，跟住望出去就遠嘅地方咧，即係第5座嗰邊就着火啦，跟住走落街睇話原來係第5座燒得好犀利，即刻翻屋企執嘢咯，跟住就走落街到而家啦，都成3個幾鐘頭都有㗎啦。而家咩心情啊？而家心情都唔知啦，見步行步啦。依家諗下今晚喺邊度瞓覺啦，因為應該都翻唔到屋企㗎啦。
測下緊要參觀啫。而家嘅心情梗係唔靚啦，睇到咁多間，即係咁多座都着火，你睇有啲直頭都係燒到入去屋嗰度咯。咁你咪變咗係咪個心情好唔靚啊？雖然即係我哋嗰度而家暫時就救熄咗啦，咁隔離左右都着火，個心情都係唔靚噶啦。如果俾我哋翻上去，你都要慢慢執嘢啊咁噶啦，唔係你又好似話真係搬唔到噶啦嘛，搬去邊啊？又唔係話多，唔係話多屋多城啊咁樣，咁你都要面對現實咯，係咪啊？Today at about 2:51, we received a report stating that there was a fire at Guangchang House, and after 5 minutes, we arrived at scene. We also found that the fire was spreading to nearby buildings and spreading inside the buildings. So we immediately carried out our firefighting and rescue operation. Because the temperature in the fire scene is very high, so we decided to upgrade the fire to number 5 alarmed fire so that we can have more resources to deal with the situation. Besides, the temperature inside the buildings concerned are very high, so it's quite difficult for us to enter the building and go upstairs to conduct firefighting and rescue operation. The Fire Services Department so far handled 28 casualties, and among the 28 casualties, 9 were certified dead at scene, and 6 of them are found serious and conveyed to the hospital. And at the hospital, they are later on certified dead. 4 of them are certified dead. During this incident, the police force had deployed around 400 police officers, which including the emergency unit, Tai Po district, traffic officers, and also the PTU. BBC न्यूज़ भी इसे रिपोर्ट कर रहा था, फिर TRT न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा था।
ARY न्यूज़ वाले भी रिपोर्ट कर रहे हैं, इवन लाइक पाकिस्तान में भी ये इतनी खबर वायरल हो गई है। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतों में आग से 14 अफराद हलाक, दर्जनों बुरी तरह झुलस गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। वांग फो कोट 8 ब्लॉक पर मुश्तमिल रिहायशी कॉम्प्लेक्स में 2000 यूनिट हैं। तेजी से फैलती आग ने चारों टावर्स को लपेट में ले लिया। मुतादिद अफराद फंसे हुए हैं। 700 फायर फाइटर्स शोले बुझाने में मसरूफ हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग इमारत के गिर्द लगे लकड़ी के जंगले में भड़की। और ये जो फुटेज है ना, ये बिल्डिंगों को रात को जो आग जल रही है टाइपों में, जो बिल्डिंगों को रात को जो आग जल रही है वो बहुत ही फेमस हुई है, क्योंकि रात को आग बहुत ही क्लियर दिखती है और ज़्यादा भड़क रही थी रात को। दिन को तो सूरज की रोशनी होती है तो वो कम हो जाती है, लेकिन उन्होंने 2 दिनों में इन्होंने आग कंट्रोल कर ली थी। हांगकांग के फायर फाइटर्स ने 28 नवंबर को कंट्रोल में आ गई थी, और अभी जाके ये जो है अभी तक भी ये लाशें चेक कर रहे हैं अभी भी एज ऑफ टुडे 29 नवंबर को। तो बहुत ही बुरी आग थी, और इतनी मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसी इतनी भरी आग पूरे इतने सारे 7 बिल्डिंगों को लगते नहीं देखी। मेरी पैदाइश 2002 में हुई थी नवंबर में, और अभी 2025 नवंबर में अभी 23 साल हूँ, और इन 23 सालों में हांगकांग में मैंने ऐसी कोई आग नहीं देखी जितनी मैंने लाइक ये देखी है, जो इतनी ज़्यादा फैली है। और इससे बड़ी आफत तो शायद ही हांगकांग में कभी देखी हो। आफत लाइक आग के मतलब सिर्फ नहीं, और भी किसी भी मतलब जो आफत होती है, इवन जो 2019 प्रोटेस्ट हुए थे उनसे भी बड़ी आफत है। तो जो आज की वीडियो अभी इतनी थी, तो अल्लाह हाफिज़। The government has confirmed at least 128 deaths and 83 injuries in the catastrophic number 5 alarm fire at Tai Po's Court. The police's disaster victims identification unit said it has already completed its search in 2 of the buildings at the affected site. This as authorities noted the identities of 44 bodies have yet to be confirmed. Charred husks are all that remain of the Wangfu Court buildings, almost destroyed by one of the city's most devastating fires. The concrete carcasses, covered in nothing more than ruined bamboo scaffolding and green netting, continue standing as a grim reminder of the more than 120 deaths. A closer look at the burnt buildings show crushed windows and even remnants of the styrofoam that allegedly sped up the spread of the flames. On the ground level, representatives from the buildings department arrived this morning to ensure the safety of the damaged structures. Wearing white protective gear, some 600 members of the police's disaster victims identification unit took part in the post-disaster effort and were searching for remains in Wangyan House and Wangtao House. Authorities have confirmed the identities of 84 bodies so far, while 44 remain unidentified. By Saturday evening, the police have yet to get in touch with 150 individuals. Meanwhile, volunteers and residents continue making their way to the housing complex, hoping to give whatever they can to relieve the pain of those who are affected or simply pay their respects to the deceased. I mainly came here today to pay condolences to the family, to pay my respect. So mainly my main concern was to look at the pet areas. I bring some food for them, and until now I'm still, because there's a lot of support already here. So I'm still seeing what I can do. Our team, our volunteer is here. Will serve the foods, waters, clothes, everything here. But we are very sad this accident here. In the Hong Konger people we are also our community is very sad about this incident. With my sister and my brother Amjad is still working with the volunteers and the government officials and Hong Kong different kind of the NGOs. They work together for that peoples. And
As you can see behind me, fire services personnel have largely concluded the rescue efforts at Wangfu Court, while the police have been clearing out the area since this morning. But we could still see residents from all across the city pouring into the area, hoping to contribute and provide humanitarian assistance to affected residents.